फ्रेंड्स, आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स टू ईयर 2018-19 रेगुलर एंड बैक का शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट डू यू मीन बाय पे ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट आर शोन इन द पे ऑफ मैट्रिक्स? इस जैसे शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, अब जितना हिसाब से पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। Point number 1, payoff matrix is a table that contains the options that are available to player of a game. payoff matrix क्या होता है? एक टेबल फॉर्म का रहता है जिसमें दो प्लेयर का ऑप्शन और स्ट्रेटेजी अवेलेबल रहता है। इट रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग। और पॉइंट नंबर 3 है, द रॉ ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट द ऑप्शन for one player and the column represent the option for other players. payoff matrix को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का जो स्ट्रेटेजी 1-2 है उसको इसी फॉर्म में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B, इफ लैम्डा एंड न्यू आर द रेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इन m/m I, Q respectively, give the formula for the probability that are n customer in the queue at any time in steady states. उसका फॉर्मूला है Pn, stand for the probabilities that there are n customers, that equals to lambda by nu to the power n into 1 minus lambda by nu. यहाँ पे lambda हो गया रेट ऑफ अराइवल और न्यू हो गया आपका रेट ऑफ डिपार्चर। क्वेश्चन नंबर 1C, इफ द अराइवल एंड डिपार्चर रेट इन पब्लिक टेलीफोन बूथ विथ ए सिंगल फोन आर 1/12 एंड 1/14 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फोन इज बिजी। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? P जिसका फंक्शन है फोन इज बिजी, दैट इक्वल्स टू 1 माइनस P। यहाँ पे 1 माइनस P में नो कस्टमर इन द बूथ। अगर उसको मैथमेटिकली लिखा जाए 1 माइनस P0 इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा बाय न्यू। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे लैम्डा बाय न्यू होगा, दैट मीन्स 1/12 डिवाइड बाय 1/4 दैट इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया आंसर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर D, कंसिडर द मार्कअप चेन्स with 3 स्टेट, और यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है 1, 2 and 3 that has the following transition matrix. यहाँ पे आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया हुआ है। ड्रॉ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज। ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स का डायग्राम है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है जिसका वैल्यू 1/2 है, देन 1, 2, 2, 1/4 and 1, 2, 3, 1/4. Next 2, 2, 1, 1/3. 2 का कुछ भी नहीं है, 0. There is no arrow mark indicate in case of 2. The next one is 2, 2, 3, that is 2/3. Next one है 3, 2, 1, 1/2. And the next is 1/2, 3, 2, 2, 1/2. एंड लास्ट वन इज 0। 0 रिप यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। ये हो गया हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स एज पर द मार्कअप चेन्स ऑफ 3 स्टेट, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1E, ए अर्न contains 1 ball and 10 blue balls. Other than their colors, the balls are indistinguishable. If one is to draw a ball from the on without picking, all the balls will be equally likely to be selected. If you draw 5 balls from the on at once and without picking, what is the probability this collection of 5 balls contain the red balls? इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है, the way I understand there are 5 distinct possibilities of red balls being drawn, that is based on the order at which it occurs. The first one is 1/11 into 10 into 10 into 9/9 into 8/8
इंटू 7/7 प्लस, उसको मैं इजी सॉल्व कर लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 1/11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 9/9 इंटू 8/8 इंटू 7/7 प्लस 10/11 इंटू 1/10 इंटू 9/9 इंटू 8/8 इंटू 7/7. Similarly 10/11 into 9/10 into 1/9 into 8/8 into 7/7 plus 10/11 into 9/10 into 8/9 into 1/8 into 7/7 plus 10/11 into 9/10 8/9 into 7/8 into 1/7. So ये हो जाएगा हमारा 5/11. Question number 1F. Consider an experiment which consists of two independent coin toss. Let the random variable x denotes the number of head appearings. Write on the probability of mass function of x. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंटली अगर कॉइन को टॉस किया जाता है तो आपका यही आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. सो द नंबर ऑफ हेड विल बी 0, 1 और 2. सो हम इसको कैसे लिखेंगे? Rx इक्वल्स टू 0, 1, 2. सिंस दिस इज ए फाइनाइट set, the random variable x is a discrete random variables. Next we need to find the probability mass function of x, which is defined as px k equals to probability of x equals to k for k equals to 0, 1 and 2. So initial states का probability देखेंगे. px 0 equals to p into x equals to 0, that means probability of 2 tails, that equals to 1/4. Next one is the next stage space 1, probability of x 1 equals to probability of x equals to 1, and here the probability is head tail or tail head. So that equals to 1/4 plus 1/4, that equals to 1/2. Last stage probability of 2, that is probability of x equals to 2 and probability of 2 heads, so that equals to 1/4. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1G. डिफाइन सिमुलेशन मॉडल एंड एनालिटिकल मॉडल एंड क्लैरिफाई द की डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. सो एनालिटिकल मॉडल क्या होता है? द एनालिटिकल मॉडल आर क्विक एंड एक्यूरेट. हाउएवर एनालिटिकल मॉडल्स आर फिजिबल्स ओनली इफ नो कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी इज एग्जिस्ट. नेक्स्ट है सिमुलेशन मॉडल. सो सिमुलेशन मतलब रेप्लिकेशन ऑफ ए सिस्टम और प्रोसेस और इमिटेशन ऑफ ए प्रोसेस और ए सिस्टम्स. सो इन सिमुलेशन मॉडल इट इज द एजुकेशन ऑफ मॉडल रिप्रेजेंट बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट गिव्स द इंफॉर्मेशंस अबाउट द सिस्टम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. सो कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल मॉडल एंड सिमुलेशन मॉडल. फर्स्ट वन इज मॉडर्न complexities. So in case of analytical model it is limited. In case of simulation model it is unlimited. The next one is run time or computational time. Very short in case of analytical model and very long in case of simulation model. The next one is data requirements is very small in case of analytical model and very large in case of simulation model. The next one is model developments. It is very unpredictable in case of analytical model and predictable in case of simulation model. Next one है flexibilities is low in case of analytical model and flexibility is very high in case of simulation model.
Last one is resource requirement is less or low in case of analytical model, and in case of simulation model resource requirement is little bit higher. Next is question number 1H. Using little formula, obtain the average waiting time in the system for m/m/i/n/ model. So पहले समझते हैं लिटिल लॉ स्टेट लॉ क्या होता है. So little law state that the average number of customer in a stationary systems, that is capital L, equal to the long term average effective arrival rate, that is known as lambda, multiplied by the average time, that is known as W, that a customer spent in the system. So little law का अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखोगे, that is L equals to lambda into W, और लिटिल लॉ फॉर द क्यू, दैट इज लैम्डा इंटू डब्ल्यू क्यू. सो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाइड करके लिखेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम स्पेंड इन द सिस्टम इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा डैश ई. सो हियर लैम्डा डैश स्टैंड फॉर इफेक्टिव अराइवल्स, और लैम्डा इक्वल्स टू द मीन रेट ऑफ अराइवल्स. न्यू स्टैंड फॉर द मीन सर्विस रेट. The next is sigma stand for, that is known as utilization of servers. L stand for mean number of customer in the system. LQ stand for mean number of customer in the queue. W stand for mean waiting time in the systems, and WQ stand for mean waiting time in the queue. The next questions we have, that is known as 1I. List out 2 advantages and disadvantages of simulations. So पहले एडवांटेजेस देखते हैं. सिमुलेशन मॉडल्स आर comparatively flexible and can be modified to adjust according to the variation in the environments of real life situations. Second advantage है, simulation is easier to use than the mathematical model, hence it is considered superior to the mathematical analysis. Third advantages है, simulation technique have advantages of being relatively free from the complicated mathematics, hence can be easily understood by the operating staff, also by the non-technical managers. Next है उसका disadvantages. So in case of disadvantages, the optimum result cannot be produced by a simulation model, since the models only deal with uncertainties. Result of simulations are merely reliable approximation involving case of statistical errors. And next, in many situations it is not possible to quantify all variables which play a role in the systems. Since computer is involved in simulation models, it makes simulation a comparatively costlier technique to use. Last questions, that is 1J. Write the procedure for determining steady state equilibrium condition in Markov chains. So in steady state behaviors of Markov chains is the long run probabilities that the system will be in each state. In other words, any number of transition applied to the system has no impact on the state vectors, that is the current behavior of the system will be continue into the futures, and it is mathematically represented as A pi equals to pi, and pi stand for steady state probabilities. So thank you for watching these videos. Thank you.